بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. Students, today we are going to start a new story and it is going to be a very interesting lesson for the students because it is a very interesting story. The name of the story is, tell me, what is the name of the story? The Mice and the Elephants. The Mice and the Elephants. Before moving on to the story, let's have a look at the picture which is given on page number 20. We can see that there are a lot of mice in the crack of a floor and they are enjoying a feast. Maybe कोई दावत है या कोई चीज़ है जिसमें ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं. तो we can see that mice are having a feast इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर. जो फ्लोर के क्रैक्स में जहाँ पर इनके घर होते हैं वहाँ पर ये लोग कोई दावत मना रहे हैं या कोई और ऐसा ख़ास कोई लंच है जिसमें ये लोग बिज़ी हैं. Now it's the time that we start our story. So look at page number 20 of your book. We are going to start the story. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. There was a time कि एक बादशाह एक बहुत ही खूबसूरत महल में रहता था और वो महल स्टोन से बना हुआ था, पत्थर से बना हुआ था. यानी it was a very strong palace. King lived in a fine stone palace. Fine means very nice. Fine means very nice. After many years, the king grew old and died. बादशाह बूढ़ा हो गया और मर गया. बादशाह बूढ़ा हो गया और मर गया. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. After many years, the king grew old and died. Everyone left the palace. सब लोगों ने पैलेस को छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया. अब जहाँ पर कोई ख्याल रखने वाला ना हो, कोई रहने वाला ना हो, तो वो जगह ख़राब हो जाती है. So this is what happened to the palace. यही हुआ पैलेस के साथ. Slowly the walls fell down and soon only the floors were left. Slowly the walls fell down and soon only the floors were left. आहिस्ता आहिस्ता करके सारी दीवारें गिर गई और सिर्फ फ्लोर बच गए. ठीक है. Slowly the walls fell down and soon only the floors were left. Now in the cracks of the floors lived hundreds of mice. ये जो फ्लोर में जितने क्रैक्स बने हुए थे, फर्श में जितने भी क्रैक्स बने थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइस रहते थे. हंड्रेड्स ऑफ माइस मीन्स अ लॉट ऑफ माइस. हंड्रेड्स ऑफ माइस मीन्स अ लॉट ऑफ माइस, मैनी माइस. ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई बैठ के उनको गिन रहा था और आपको बता रहा है कि 100 माइस थे. ठीक है, आपको सिर्फ ये आइडिया दे रहे हैं कि देवर मैनी. Now in the cracks of the floors lived hundreds of mice. They lived with their sons and grandsons, their grandfathers and their grandmothers. They lived with their son and grandson, their grandfathers and their grandmothers. They were all very comfortable
They played games and had festivals and marriages, dramas and feasts. ओके दे वर लिविंग विद देयर सन्स एंड ग्रैंडसन, मतलब अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ रह रहे थे, और अपने मतलब फादर्स और ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स के साथ भी रह रहे थे, मतलब नस्ल दर नस्ल ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है। तो क्या है कि ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, पुरसकून ज़िंदगी गुजर रही थी इनकी। दे वर ऑल वेरी कंफर्टेबल, दे वर ऑल वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, एक बात याद रखें कि कंफर्टेबल में ओ और आर दोनों साइलेंट है। एफ के फ़ौरन बाद आप टी पढ़ोगे, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है। दे प्लेड गेम्स, ये गेम्स खेला करते थे। हैड फेस्टिवल, इनके त्यौहार होते थे, जैसे हमारे ईद और ईद वगैरह होती है, इसी तरह इनके फेस्टिवल्स भी होते थे, और शादियां भी करते थे, और ड्रामास भी करते थे, और एक दूसरे की दावतें भी करते थे। फीस्ट, फीस्ट, दावतें भी होती थी। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, दे वर ऑल वेरी हैप्पी, they were all very happy. Now I'm going to read the paragraph again. Once upon a time a king lived in a fine stone palace. After many years the king grew old and died. Everyone left the palace. Slowly the walls fell down, and soon only the floors were left. Now, in the cracks of the floors lived hundreds of mice. They lived with their sons and grandsons, their grandfathers and their grandmothers, and they were all very comfortable. They played games, had festivals and marriages, dramas and feast. They were all very happy. रहने को इतनी बड़ी जगह मिल गई थी, पैलेस, पैलेस कोई छोटी जगह नहीं हुई थी, वहाँ पर इतनी बड़ी जगह उनको मिल गई, वहाँ पर वो रहते थे अपनी सारी जनरेशन्स के साथ, और वहाँ पर मज़े कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, फेस्टिवल्स मना रहे थे, मैरिजेस, ड्रामास और फीस्ट्स होते थे। तो ऐसी जगह पर कौन खफा होगा, ज़ाहिर बात है। तो दे वर ऑल वेरी हैप्पी। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसको घर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपके लिए बहुत इजी होगा, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है। कोई एक आध वर्ड है, पहला जो वर्ड है वो पैलेस है। पैलेस इज़ न्यू वर्ड बिकॉज यहाँ पर इसके जो स्पेलिंग है वो थोड़े डिफरेंट है। पी पहला ए और दूसरा ए एक दूसरे से डिफरेंट साउंड्स दे रहे हैं। तो पैलेस, 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 ठीक है। ग्रू, ग्रू में ई डब्ल्यू की वजह से अक्सर बच्चे इसको ग्रू पढ़ते हैं, ये ग्रू नहीं है, ग्रू, ग्रू डबल ओ वाली साउंड दे रहे हैं आपको, ग्रू। और इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं वो आपके लिए क्रैक्स, क्रैक्स, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, ग्रैंडसन्स, ग्रैंडसन्स, grandfathers, grandfathers, grandmothers, grandmothers, comfortable, comfortable, played, played, festivals, festivals, marriages, marriages, dramas, dramas and feasts, feasts and happy. आई होप आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो बहुत ईजी हैं, और कोई लॉन्ग वर्ड्स भी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग्स वाले वर्ड्स भी नहीं है जिनको समझना मुश्किल हो जाए।
तो wish you best of luck. Have a nice day. Thanks for your time. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.